Good afternoon, everyone. I hope you all can hear me and see me clearly. Please write yes in the chat if you can hear me and see me. Guys, am I audible? Okay, great. Thank you. Thank you for the confirmation. Sir, can you hear me? No, sir, I can't hear you. Devin, sir, I can't hear you. Can you please confirm if you can hear Devin, sir? Prashant, can you please connect with him once? Guys, we'll be starting session in next 2 minutes. This is the afternoon trading session. First session of the week. We'll focus on stock options. We'll try for index trade if possible, or else we'll take up the stock queries and definitely we'll share BTST by the end of the day, end of the session. Sorry. Then so I'll suggest you to please leave and join the session. Himadri, share view, Kalyan Jewelers. I can see more questions are coming in. Hello, good afternoon, everyone. Sir, I've sent an invite to join the stage. Please accept that. Then, sir, can you hear me now? Hello, sir. So this is basically no worries, Ashish, no worries. We'll start the session in next 2 minutes. Sir is already here. Just that we're facing some technical issues and it will be sorted within a minute. Next 1 or 2 minutes. Devin sir, can you hear me? Can you please try speaking? Sir, we can see your screen, but we can't see you or hear you. Guys, I just had a word with the expert. We will be starting the session in a minute. There was some issues and हमारी उनसे बात हो गई है. We'll just need a minute to set up the process and then we are good to go. Maybe Devin sir is taking the session today.
Sir, I have accepted your request from the research team's ID. Hello. Yes, sir, we can hear you. Yes, am I audible, right? Yes, sir, you're audible. Okay, just give me a couple of seconds. I'll just share my screen and we'll start the session. Sure, sir. Audible but not visible. Maybe we will definitely turn on the camera also. Just give us a minute. इंट्रा का कोई अच्छे सा बताओ सर. We will definitely share a good intro today. We try our best, Aviji. Yes, sir, you are visible, you are audible, your screen is visible, and we are good to go. Okay, so we'll start the session with Nifty only. We can see that Nifty is down by almost more than 400 points right now, trading below 23,600 levels. काफी ज्यादा न्यूज फ्लोज है मार्केट में क्योंकि कोई वायरस है चाइना से जो वापस इंडिया में 2 केसेस कुछ मिले हैं बैंगलोर में. सो दैट इज वन ऑफ द रीजन हम लोग बोल सकते हैं एज ऑफ नाउ कि जिसकी वजह से निफ्टी ऑलरेडी इतना डाउन है, बैंक निफ्टी भी डाउन है. तो मार्केट में जो सेल ऑफ हो रहा है वो उसकी वजह से, और उसका अगर हम लोग रियली ये रीजन है कि नहीं वो पता करने के लिए अगर हम लोग कुछ डायग्नोस्टिक स्टॉक्स देखें तो वो काफी अच्छे ट्रेड कर रहे हैं, हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं. सो दैट इज द रीजन निफ्टी इज डाउन एंड सम डायग्नोस्टिक स्टॉक्स आर अप. सो स्टॉक स्पेसिफिक जो फार्मा रिलेटेड या वो स्टॉक्स है वो एक्शन में है. Diagnostic stocks are in action. Nifty is down. So Nifty on the lower side there is a support around 23,500, and if that support breaks, then on the lower side 23,350. I've just marked this level on charts that 23,350 is the other strong support. If it breaks that and sustains below that, we'll be seeing a good down move further. If we talk about Bank Nifty, I'll just share the chart of Bank Nifty as well. So Bank Nifty is more weaker as I earlier said that Bank Nifty is more weaker. It is trading around 49,800. This is the strong support for Bank Nifty. If this support levels is reached, then we can further see some good correction in Bank Nifty as well. I have marked the line over here, which is support for Bank Nifty. It is in the range of 49,800, 49,650. तो एक रेंज है, वहां पे सपोर्ट है. अगर बैंक निफ्टी ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो थोड़ा और फर्दर करेक्शन देखने मिल सकता है. ओवरऑल व्यू बेरिश है. बैंक निफ्टी इज ऑलमोस्ट डाउन बाय 1170 पॉइंट्स. सो 1200 पॉइंट के आसपास का करेक्शन ऑलरेडी बैंक निफ्टी में दिख रहा है. बैंकिंग स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो काफी बेरिश है. इफ आई टॉक अबाउट द बेरिश बैंक, देन I'll just see that Axis Bank थोड़ा सा चार्ट स्ट्रक्चर वीक है. कुछ दिन पहले ब्रेकडाउन हुआ था, वहां से साइडवेज कंसोलिडेशन है. आज फर्दर ब्रेकडाउन की जो है चांसेस है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई थिंक वी विल गो इनटू अ ट्रेड. 1060 के आसपास है, वहीं सपोर्ट पे है. 1060 इज द सपोर्ट फॉर एक्सिस बैंक. इफ दिस सपोर्ट इज ब्रेकन देन वी कैन सी फर्दर करेक्शन इन दिस पर्टिकुलर काउंटर. सो आई थिंक 1060 का जो पुट ऑप्शन है वो हमारे रडार पे होना चाहिए. 26 के आसपास अभी चल रहा है. इफ वी गेट दिस अराउंड 25, ₹1 भी अगर नीचे मिलता है तो वी विल एंटर दैट. हल्का सा बाउंस अगर आता है एक्सिस बैंक में तो वी विल एंटर दैट. 25 पे हम लोग एंटर करेंगे. 26.20 के आसपास अभी चल रहा है. सो वी विल बाय अराउंड 25, 21 will be our stop loss, and around 30 to 34 levels can be our targets. So अगर बाउंस बैक आता है तो हम लोग उसमें एंटर करेंगे. 1060 put option of Axis Bank that is on our radar, currently trading at 26 rupees. तो 25 पे आता है then we will enter. I am repeating the trade
Axis Bank 1060 put, buy near 25, stop loss 21, target 30 and 34. Sir, any stocks on radar apart from Axis Bank? Yeah, so as of now, Axis Bank is on the radar. One more breakdown stock I had my radar previously, that is Bharat Forge. I'll just share the chart of that. So see, we have seen that it has broken a support level of 1260 trading at 1250. Already breakdown आ गए stock में, so we are not entering a put option in this particular counter, but we are waiting for Axis Bank to give an entry to us. तो भारत फौज में भी एक bearish pattern higher levels पे कोई sustain नहीं, कोई follow buying नहीं है. And we can see that the stock is moving downwards. 1260 का support level break हुआ है भारत फौज में. So that is one of the counter which is looking bearish, and that's why that is on our radar as well. Axis Bank की अगर मैं बात करूँ, Axis Bank put option is currently trading at 25.35. So थोड़ा सा bounce back stock में देखने मिला और option थोड़ा सा नीचे है. 25.35 is the current market price. If it triggers around 25, will enter the trade. 25 के आसपास हम लोग एंटर करेंगे ट्रेड को. So this is the intraday chart. Currently we are tracking this particular counter. जो लो है वो ब्रेक हो सकता है, ऐसे चांसेस है. बैंक निफ्टी ने हम लोग ने बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखा, काफी बेरिश है compared to Nifty as well. So Axis Bank is one of the counter. If we consider some other banks as well, then the leader HDFC Bank has also shown a huge profit booking. It is down by more than 2% today. But HDFC Bank has a support near 1700 levels. Axis Bank has shown weakness consistently, and that's why we are entering a put option of Axis Bank. 25.15 is the current market levels of 1060 put option. We are tracking that particular option itself. If we get around 25, we'll enter that particular option for the target of 32, 34. Nifty is trading near days low. Bank Nifty is trying to hold 49,800 levels, 750 levels, but I think this can be broken off today. Reason being the news of the new virus in India and from China, and some very downfall and corrective move in maximum number of stocks. So I think advanced decline ratio, if we watch that particular advanced decline ratio, then also we'll see that there are more declines than advances. There are hardly some stocks like diagnostic stocks, some of the diagnostic stocks which are trading in green. Other than that, we can see that more or less all the counters are in red. So that's why we are tracking put option. Bank Nifty is more weaker than Nifty as discussed. Axis Bank 25.25 is the current market price. We are tracking that particular option. Some of the bullish counter includes Apollo Hospital. If we consider the chart of Apollo Hospital, that looks a bit sideways to bullish. I'll just share the charts of Apollo Hospital as well. Yeah, so this is the charts of Apollo Hospital. I think there is a small resistance around 7,445 watt levels. If Apollo Hospital crosses and sustains above that level, we can say good up move in Apollo Hospital as well. As the market are not with us and not giving strength from lower levels, so we are
avoiding call options as of now. Axis Bank put option has triggered our buying price. It is trading at 24.90 levels. So one can enter this particular counter, Axis Bank 1060 put at 25. It is trading at 25 right now. So we will enter this. 21 is the stop loss and 32 to 34 is our target. This is intraday charts of Axis Bank. We are expecting level of this can move towards our target. So our trade has been triggered at 25. It is trading at 25.15 levels right now. We are expecting this to move towards 30 to 34. So we'll keep a stop loss of 21 and we'll hold this option for some time. And if we get any move, we'll try to book profits in this. सर कल्याण ज्वेलर्स में भी एंटर कर सकते हैं या रुके थोड़ा सा? कल्याण ज्वेलर्स का टेक्निकल पैटर्न अच्छा था. आज के दिन में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया हो. आई जस्ट शेयर द चार्ट्स ऑफ कल्याण ज्वेलर्स एज वेल. एग्जैक्टली. सो आज के दिन में फर्दर प्रॉफिट बुकिंग आया. ब्रेकआउट लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है स्टॉक. सो फ्रेश बाइंग के लिए वेट करें. आई थिंक ब्रेकआउट के बाद ही फ्रेश एंटर करना चाहिए. देयर इज अ रेजिस्टेंस अराउंड 780 ऑड लेवल. सो 780 के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन करता है तो ही हम लोग इसमें एक शॉर्ट टू पोजिशनल टर्न के हिसाब से एक ब्रेकआउट के ऊपर ले सकते हैं. टिल देन फ्रेश बाइंग वी शुड अवॉइड. ऑन द लोअर साइड इट हैज सपोर्ट अराउंड 715 लेवल्स. उसके नीचे अगर जाता है तो थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है. सो इफ एनीवन इज होल्डिंग फ्रॉम लोअर लेवल्स, 715 can be a trailing stop loss, and one can look for buying only above 780. Till then one should wait as markets are not supporting for any call on the higher side. So wait करेंगे थोड़ा सा. So कल्याण ज्वेलर्स में हम लोग वेट कर रहे हैं. एक्सिस बैंक का हम लोग ने पुट लिया हुआ है which is trading around 24.90 levels right now. So we'll wait for this put to move on the higher side and Axis Bank to move on the lower side. So can we take some quick queries? Yes, definitely. I am tracking the put option. Till then we can take some queries because overall market has do not have any strength, and there might be some queries from our viewers. So definitely we'll take some queries as well. Sir, your view on BL and Hudco? Bhel, right? Yeah. Okay, so overall chart structure is bearish. We have seen that it is trading around the support levels of 220, 215 levels. 215 के नीचे अगर जाता है तो फर्दर करेक्शन आ सकता है स्टॉक में. एज ऑफ नाउ कोई बाउंस बैक, कोई रिवर्सल के संकेत नहीं है. जब तक स्टॉक 240 लेवल्स क्रॉस नहीं करता तब तक फ्रेश बाइंग अवॉइड करनी चाहिए. And one should avoid fresh buying, and 215, 220 that is the support level, and the stock is trading at this level only. So fresh buying recommended नहीं है. अगर होल्ड है तो 215 का स्टॉप लॉस रखे. उसके नीचे और करेक्शन हो सकता है. नेक्स्ट इज हुडको, राइट? Yes, sir. ओके, सो हुडको की बात करूं तो लोअर लेवल से एक बाउंस बैक अच्छा दिखाया है स्टॉक ने. आई थिंक वन कैन होल्ड विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 226 to 27 levels. Once stock sustains about 255, then we can see a good up move in this particular counter. Till then it is sideways, and anyone holding from lower levels 225 can be the stop loss. Sir, Suzlon? सुजलॉन एक सपोर्ट लेवल्स ब्रेक किया हुआ है. 61 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो ब्रेक हुआ है आज के दिन में. ओवरऑल मार्केट देयर इज नो स्ट्रेंथ इन मार्केट एंड स्टॉक्स आर विटनेसिंग प्रॉफिट बुकिंग एंड सम करेक्शन. Suzlon has broken its support of 61 right now.
So anyone holding from lower levels exit कर लो, profit है तो book कर लो. Stock में ऊपर की levels पे strength नहीं है. We were discussing this stock many times and there was a resistance around 70 के levels cross नहीं कर पाया stock. तो 70 के levels cross करेगा तो एक short to medium term के लिए हम लोग फिर से एंटर कर सकते हैं स्टॉक में. तब तक स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं है. ऑन द लोअर साइड 55 59 ये लेवल्स कुछ है जहाँ पे एक सपोर्ट है स्टॉक में. सो इफ एनीवन वांट टू टेक सम रिस्क कैन होल्ड, देन कैन होल्ड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 57 लेवल्स. उसके नीचे फिर और भी करेक्शन आ सकता है स्टॉक में. Sir, Adani Ports 1200 call at 53. Adani Ports, right? Yes, sir. Okay, so I think there is a breakdown in Adani Ports. It has broken 1180 levels. So anyone holding call option should exit that particular counter. There will be decay, and again delta is not moving as per the expectation. So I think one should exit the call option. Should not hold. There are multiple news flows in Adani almost every day, and that's why one should avoid this particular counter for options. ओवरऑल अदानी ग्रुप में अदानी पोर्ट्स एक ओवरऑल अच्छा काउंटर है, लेकिन अगर चार्ट्स पे हम लोग देखें तो थोड़ा सा ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है. तो कॉल ऑप्शन है तो डेफिनेटली एग्जिट कर लेना चाहिए. Sir, PFC. जैसे हम लोग चार्ट पे देख पा रहे हैं, देयर इज सपोर्ट अराउंड 431 432 लेवल्स. तो पीएफसी में यहाँ पे एक सपोर्ट है. अगर वो सपोर्ट ब्रेक होता है तो ही स्टॉक में थोड़ा फर्दर करेक्शन आएगा. ऑन द हायर साइड देयर इज अ रेजिस्टेंस अराउंड 480 लेवल्स. उसके ऊपर एक अच्छा अप मूव देखने मिलेगा. सो आई थिंक करंटली इट इज साइडवेज इन अ रेंज ऑफ 480 एंड ऑन द लोअर साइड देयर इज अ सपोर्ट अराउंड 430. तो 430 480 के रेंज में कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए. अगर कोई भी लेवल्स क्रॉस करता है तो डेफिनेटली एक ट्रेड बन सकता है स्टॉक में. 480 के ऊपर अच्छा मूव देखने मिल सकता है. Those who are holding for positional to long term can hold with a stop loss of 430, and 430 is a strong support for this counter. Sir, Himadri Specialty Chemical View. ओके, सो ओवरऑल काउंटर में थोड़ा सा स्ट्रेंथ है. आज के दिन में मार्केट के साथ थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है स्टॉक. ऑन द लोअर साइड देयर इज अ सपोर्ट अराउंड 535 लेवल्स. 535 540 अगर ब्रेक होता है तो एग्जिट कर लेना चाहिए. तब तक होल्ड कर सकते हैं. 540 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए. ऑन द हायर साइड जैसे ही ये 600 के लेवल्स क्रॉस करेगा, वी कैन सी अ गुड अप मूव इन दिस पर्टिकुलर काउंटर. So 600 is the resistance. On the lower side, 535 540 is the support for this counter. Till then this is sideways counter. Overall chart में strength है. So I think stock should bounce back and it should cross 600 levels once market gets stabilized. Sir, update on our trade. Yes, so we have entered the put option at 25. It is trading at 24 right now. 1 रुपया नीचे है हम लोग के कॉस्ट से, लेकिन we are holding with a stop loss. We'll wait. बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो एक हल्का सा बाउंस आया लोअर लेवल से. It has not broken 49,800 levels. And एक्सिस बैंक में भी एक हल्का सा बाउंस हमें देखने मिल रहा है. 23.75 के लेवल्स के आसपास अभी आया है. Bank Nifty also has shown some bounce back from that particular support levels itself, but we are holding this particular counter. हम लोग stop loss के साथ hold कर रहे हैं. If we feel that this is kind of a reversal, then we will exit this particular counter. Till then, we'll hold with the stop loss of 21.
Sir, Zomato wait या enter? ओके सो आई थिंक जोमेटो एक ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा रिटेस्ट की तरफ आ रहा है. दोज हु आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म व्यू कैन एंटर दिस पर्टिकुलर काउंटर एट दैट this level as well. If we get a dip around 240, then that will be the level to enter for long term in Zomato. Until and unless if the view is short term, then one should avoid buying right now. Above 280 to 285, we'll see a small breakout in this particular counter, and after that one can enter for short term. Long term के लिए definitely अभी भी बाय कर सकते हैं. थोड़ा डिप आता है 240 के आसपास तो भी बाय कर सकते हैं. ओवरऑल काउंटर में स्ट्रेंथ है, ऊपरी लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है. करेक्शन के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी के करेक्शन के साथ कोई ज्यादा करेक्ट नहीं हो रहा है स्टॉक, तो डेफिनेटली 240 इज द सपोर्ट. लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेना है तो 240 के आसपास आए तो ऐड करना चाहिए. ऑन द हायर साइड 280 85 इज अ रेजिस्टेंस. वो क्रॉस करने के बाद एक शॉर्ट टर्म के लिए मूव के लिए एक अच्छा मूव के लिए हम लोग बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 300 एंड अबव. Sir, your view on HFCL? ओके सो HFCL की बात करूं तो एक ब्रेकडाउन दिख रहा है. सपोर्ट लेवल ब्रेक किया है 112 113 का जो सपोर्ट है वो ब्रेक हुआ है. आई थिंक ऑन द लोअर साइड इट इज ट्रेडिंग अराउंड द नेक्स्ट सपोर्ट ऑफ 107 राइट नाउ. तो 107 के नीचे अगर आज की क्लोजिंग आती है तो थोड़ा सा करेक्शन और आ सकता है स्टॉक में. सो दोज हु आर होल्डिंग एंड आर इन प्रॉफिट्स देन कैन एग्जिट, और वन कैन ट्रेल स्टॉप लॉस ऑफ 100 एंड कैन होल्ड. Sir, HDFC, can HDFC be bought at this level? HDFC Bank? Yeah. सो आई थिंक HDFC बैंक सपोर्ट के आसपास है. लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए. अगर बैंक में कोई बैंक अच्छा लग रहा है तो दैट इज ICICI बैंक. वन कैन लुक एट दिस पर्टिकुलर काउंटर. अगर लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के हिसाब से बाय करना है तो ICICI बैंक बाय कर सकते हैं. ICICI बैंक हैज मल्टीपल सपोर्ट्स अराउंड 1230 1220 लेवल्स. मल्टीपल सपोर्ट्स है. स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रहा है कंपैरेटिवली सारे बैंकिंग स्टॉक्स के. अगर मैं बात करूं तो ICICI बैंक इज द ओनली बैंक हु इज होल्डिंग इट्स स्ट्रेंथ. बाकी सारे स्टॉक्स में वीकनेस है. HDFC बैंक में भी वीकनेस है. तो आई थिंक अगर कोई बैंक बाय करना है तो ICICI बैंक बाय कर सकते हैं. Sir, review on Maruti? मारुति अगेन लास्ट 3 दिन में एक अच्छा मूव मारुति में देखने मिला. दिस वाज आफ्टर अ न्यूज ऑफ ऑटो सेल्स नंबर. ऑटो सेल्स के काफी अच्छे नंबर्स आए थे मारुति के. देयर वाज अ गुड ग्रोथ सीन इन दिस पर्टिकुलर काउंटर, और इसकी वजह से स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने मिला. टुडे इट इज डाउन ड्यू टू द मार्केट करेक्शन एंड थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है. दोज आर होल्डिंग होल्ड कर सकते हैं. एक सपोर्ट लेवल से 11,650 के आसपास. तो 11,650 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं फॉर फर्दर टारगेट्स, एंड वन शुड कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑन दिस पर्टिकुलर काउंटर. ओवरऑल काउंटर में एक बाउंस बैक देखने के बाद थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है काउंटर. सो डेफिनेटली 11,650 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं. This will be the last question from my side. Ease my trip. Okay, so there was, I think, a news in this particular counter. That's why this stock opened by more than 15% gains, और उसके बाद वहां से प्रॉफिट बुकिंग आया. ओवरऑल काउंटर में कोई ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं. आई थिंक ऑन द हायर साइड देयर इज अ रेजिस्टेंस अराउंड 19 लेवल्स. 19 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो ही एक अच्छा अपमूव थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखने मिल सकता है. टिल देन वन शुड अवॉइड दिस पर्टिकुलर काउंटर. नीचे में सपोर्ट्स है डेफिनेटली अराउंड 14.70 लेवल्स. तो 14.70 के स्टॉप लॉस से अगर होल्ड करना है तो कर सकते हैं. काफी रिस्की ट्रेड रहेगा. ऑन द हायर साइड वंस इट क्रॉस 19 तो अच्छा मूव आएगा, क्योंकि आज न्यूज के बाद भी 19 लेवल्स क्रॉस नहीं कर पाया स्टॉक. तो आई थिंक दैट विल बी द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर दिस काउंटर.
Sir, I guess we can have a final update on the Axis Bank and then we can end the session. Okay, so Axis Bank put option is currently trading at 23.65 levels. उसी के आसपास है 25 पे हम लोग ने बाय किया था. Those who can take some risk and can carry this trade, then one can carry. Axis Bank में कोई ज्यादा strength नहीं है. अगर हम लोग सपोर्ट लेवल के आसपास थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पॉसिबली ये सपोर्ट लेवल्स ब्रेक हो सकते हैं. So those who can take some risk can hold and carry this with a stop loss of 21 as mentioned. उसी के साथ होल्ड कैरी कर सकते हैं. Those who cannot take risk थोड़ा सा वेट कर लीजिए. अगर कॉस्ट के ऊपर आता है तो एग्जिट कर लेना चाहिए. If anyone cannot take risk, और अगर कोई बुक करना चाहता है, थोड़ा हल्का सा लॉस है, it is 1.20-25 पैसे लॉस राइट नाउ. तो अगर किसी को बुक करना है तो लॉस बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए. ओवरऑल स्ट्रेंथ नहीं है स्टॉक में. स्टॉक नीचे जा सकता है. कल के दिन में हो सकता है थोड़ा सा गैप डाउन भी देखने मिले. निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है. और अगर ये वायरस का न्यूज कुछ फर्दर आता है, then there will be some further correction in this counter as well as in two markets. तो मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नहीं है as of now. So those who can take risk only should carry this particular counter. 21 is the stop loss, and one should hold with that particular stop loss only. So guys, that will be all. Thanks a lot everyone for joining in. Thank you, sir, for joining and taking all these queries. We have updated on the trade which we have shared, and at the same time we tried to take all the queries. जो queries हम नहीं ले पाए, feel free to drop it on Stockholm and we'll be happy to answer them. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you.